Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start the problems on valuation of shares. Now we start the problems. So previous session we have completed the theoretical part of valuation of share. We have discussed about the meaning of the term share and what is value of share, what are the different types of values are there, then methods of calculating the value of share. We have discussed in detail regarding the topic. Now we'll start the problem. Okay, so before starting, I hope everybody got the hard copy printout of the problems list and keep it beforehand before watching this video. Then only you can be able to understand. Now see carefully. First short problem I am reading out. The summarized balance sheet of Bharat Company Limited as at 31st March 2004 is as follows. So short answer questions. First one, Bharat Company Limited. Balance sheet is given. Equity and liabilities, shareholder fund, share capital 5 lakh, reserves and surplus 1,50,000. Non-current liabilities, long-term borrowings are 1 lakh, current liability are 70,000. The total of the liability side 8,20,000. Now asset side, non-current assets में fixed assets, tangible assets 4,50,000, intangible assets goodwill is 80,000. Other non-current assets, preliminary expenses. Remember I told you in the theory session, preliminary expenses is a fictitious asset, should not be taken into account. Then current assets are 2,80,000, total 8,20,000. Balance sheet is given. Notes forming part of financial statements. तो नोट नंबर 1, 2, 3 दिया है बैलेंस शीट में. अब 1, 2, 3 क्या है नोट्स में देखेंगे. नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid 5 lakh. तो पहला पॉइंट you have to remember 50,000 each equity shares. Reserves and surplus, general reserve is there, long term borrowing 10% debentures. Over. तो notes are over. Now adjustment are given. The goodwill is independently valued at 60,000. Actually goodwill का वैल्यू बैलेंस शीट में भी दिया है, एडजस्टमेंट में भी दिया है. एडजस्टमेंट में जो है वो करंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है. सो व्हेनेवर प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन वी शुड नॉट कंसीडर द बैलेंस शीट वैल्यू. अब बैलेंस शीट को नहीं देखेंगे. एडजस्टमेंट में जो गुडविल वैल्यू 60,000 दिया ये लेंगे. एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स 4,30,000. दिस इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ assets, fixed assets. This we should take. There was a contingent liability of 30,000 which has become payable. What do you mean by contingent liability? It is not an actual liability. It may become a liability. The liability which is dependent on some event. अगर event हुआ तो liability होगी, नहीं हुआ तो नहीं होगी. तो conditional liability is called contingent liability. लेकिन यहाँ पर दिया है कि contingent liability है जो बैलेंस शीट में नहीं बता रहा, लेकिन that contingent liability is to be paid. Now it is becoming actual liability. पहले contingent liability थी तो बैलेंस शीट में नहीं बताए, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा है कि now it is payable. So that means it has become an actual liability. तो ये actual liability को भी लेंगे. Ascertain the value of share according to net assets method. This is the first problem on net assets method or intrinsic value method. See the solution carefully. Calculation of value of share as per net assets method. Intrinsic value method. Goodwill 60,000. Adjustment में दिया है. Fixed asset 4,30,000. Adjustment में दिया. Realizable value. Current assets adjustment में नहीं दिया तो balance sheet value ले लेंगे. 2,80,000. The total of the assets are 7,70,000. Outside liability 10% debentures, current liability and contingent liability now payable. पहले contingent liability थी, अब payable है. तो ये outside liability हो गया total 2 lakh. तो assets में से liabilities को minus कर दो. ये shareholders fund है. 5,70,000 is the shareholders fund. अब उसमें से preferential capital minus करेंगे, but we don't have preferential capital in the present problem. ये problem में नहीं, आने वाले problem में रहेगा. तो we don't have dash. तो assets, net assets available for equity shareholders.
अब assets बचे हुए जो equity shareholders को 5,70,000. The formula for intrinsic value. Intrinsic value per share is equal to net assets available for equity shareholders divided by number of equity shares. Net assets available 5,70,000 है. और प्रॉब्लम में देखिए आप नोट नंबर 1 में दिया there are 50,000 shares of rupees 10 each. तो कंपनी के पास 50,000 शेयर्स है तो 50,000 shares 5,70,000 divided by 50,000 11.40. This is the intrinsic value of share or the value of share according to net assets method. That's it. So one problem, short problem we have completed. Now see the next, second problem. A company limited's equity capital comprises 10,000 equity share of 100 each fully paid, 10,000 equity share of 100 each 75 per share paid up. अभी in the theory session we have discussed partly paid up shares. अगर कोई कंपनी में fully paid up और partly paid up दोनों भी अगर है तो how to calculate the intrinsic value? I have explained you in detail. Now we are applying that procedure. The net value of assets is rupees 50 lakh. कंपनी के पूरे net assets यानी total assets minus outside liabilities करने के बाद net assets बचे 50 लाख है. Compute the intrinsic value of equity share. So how to calculate the value of share when we have fully paid up as well as partly paid up? We have to make a notional call, imaginary call, to convert the partly paid shares into fully paid. Now see the solution here. Calculation of intrinsic value of share. Net value of all assets 50 lakh given in the problem. Notional call. Notional का मतलब imaginary, not real. Notional call on partly paid shares. तो कंपनी के पास 10,000 shares है of rupees 100 each, 75 paid up. 100 रुपये में से 75 रुपीस paid up है तो unpaid कितना है 25 रुपीस. अब कंपनी 25 रुपए कॉल कर ली, इमेजिन करेंगे तो एक शेयर पर 25 रुपीस. हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 10,000. 10,000 into 25 2,50,000. ये इमेजिन करना कि 2,50,000 रुपया आ गए शेयर होल्डर्स के पास से आ गए तो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 52,50,000. 50 लाख रुपए के तो एसेट्स है और 2,50,000 रुपए फाइनल कॉल आ गया पैसा. टोटल 52,50,000. द वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर. अब पहले मालूम करेंगे व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द फुल्ली पेड अप शेयर. सेम फॉर्मूला, अमाउंट अवेलेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. अमाउंट अवेलेबल 52,50,000. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्योंकि पूरे फुल्ली पेड अप है. अब यहां नोशनल कॉल करने से पार्टली पेड भी फुल्ली पेड हो गया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 प्लस 10,000 20,000. तो कंपनी के पास 20,000 शेयर्स है तो 52,50,000 डिवाइड बाय 20,000 262.5. 262.5 is the intrinsic value of fully paid up share. Now we have to find out what is the partly paid up value. Intrinsic value of partly paid up share. तो value of fully paid up share कितना आया हमको 262.5. 262.5 is the value of fully paid up share. अब ये value of fully paid up share में से amount uncalled on partly paid share. जो पार्टली पेड शेयर के ऊपर कितना अमाउंट अनकॉल्ड है, कॉल नहीं करे 25 रुपीज नहीं करे तो 25 रुपीज माइनस तो इट विल बिकम 237.5. दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर. दैट्स इट. सो टू शॉर्ट प्रॉब्लम्स वी हैव कंप्लीटेड. नाउ सी द थर्ड प्रॉब्लम. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. तो हियर बैलेंस शीट इज गिवन. Particulars, equity and liability, shareholders fund, share capital 4 lakh, reserves and surplus 5,60,000. Long term borrowing 6%, debenture 1 lakh, current liability 1 lakh. So you can see outside liabilities are only 2. That is 6% debentures and current liability. Non-current assets, fixed assets are 9 lakh. Non-current investments are 80,000. Then other non-current assets, preliminary expenses 20,000. Ignore, never. You should never take. Current. Then share capital 40,000, equity share of 10 each. Then reserves and surplus, reserves, P&L account. That's it. So from this we have to find out the intrinsic value. It's very simple already. We have discussed. First we take assets. Fixed assets, tangible fixed assets we have taken 9 lakh. Investments 80,000. चाहे current investment हो या non-current investment हो, all we should take into account. Then current assets are 1,60,000. Total of the assets are 11,40,000. Then from this we deduct the outside liability.
6% debentures 1 lakh, current liabilities are 1 lakh, total 2 lakh rupees. Subtract 2 lakh rupees, 9,40,000 is the shareholders fund. We don't have the preferential capital. For the formality purpose, we are writing it all so that we will not forget it. So less preferential capital dash. So net assets available for equity shareholders 9,40,000. Formula: intrinsic value, amount available divided by number of equity shares, 9,40,000 divided by 40,000, 23.50. This is the intrinsic value of share. So we have completed problem number 3. Come on students, now we'll start the next problem, problem number 4. Come on, see the problem number 4. Following are the particulars, from the following particulars calculate the value of an equity share. 1,000, 10% preference shares of rupees 100 each, 1 lakh. तो कंपनी के पास 1 लाख रुपये का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और उसके ऊपर डिविडेंड जो पे करना है 10%. 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, rupees 8 per share called paid up, 3,20,000. 40,000 शेयर से एक शेयर 10 रुपये का है लेकिन पूरे 10 रुपये कंपनी कॉल नहीं करी. अभी कॉल्ड अप अमाउंट ओनली 8 रुपीज, पेड अप अमाउंट इज 8 रुपीज. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2,50,000 एंड रेट ऑफ टैक्स 40%. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर 20% ऑफ प्रॉफिट. तो कंपनी के पास एक पॉलिसी है कि एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा उसका 20% वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू रिजर्व्स. और रिजर्व्स को ट्रांसफर करने के बाद डिविडेंड पे करना है. किसको पे करेंगे? पहले अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिविडेंड मस्ट बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. उसके बाद बचा प्रॉफिट तो इक्विटी को जाएगा. Then transfer to general reserve every year 20% of profit. Normal rate of earnings, normal rate of return is 18%. देखिए in this problem we are not given the assets and liabilities. We cannot apply intrinsic value. In this problem profits are given, earnings are given. So we have to apply earning capacity formula or yield basis. Yield basis में formula previous problem में हम apply करें. Yield value is equal to expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value per share. ये फॉर्मूला याद रखिए. Yield value is equal to expected rate of return ERR divided by normal rate of return NRR into paid up value per share. तो अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट हाउ मच इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 गिवन. इनकम टैक्स रेट 40%. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स डिडक्ट करना. तो टैक्स निकाल दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000. Profit after tax. Now it is the policy of the company to transfer 20% of profit to reserve. So 20% of 1,50,000, 30,000. Transfer to reserve. निकाल दो 150 minus 30, 120. अब 1,20,000 rupees profit available for shareholders. दोनों shareholders है, preference और equity. तो पहले किसको पे करना है? Preference shareholders. तो preference dividend. Preference dividend 10% of 1 lakh. In the problem first line it is given. 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर 10% डिविडेंड पे करना है 10,000. तो 1,20,000 प्रॉफिट था, उसमें से 10,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिए. तो 1,10,000 इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल 1,10,000. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ERR. तो यील्ड वैल्यू मालूम करने से पहले हमको ERR मालूम करना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. तो फॉर्मूला है profit available for equity shareholders divided by equity share capital into 100. So profit available 1,10,000 or equity share capital, you can see the problem, equity share capital 3,20,000. So 1,10,000 divided by 3,20,000 into 100, 34.375%. 34.375%. This is called the ERR, expected rate of return. Now we can apply the formula yield value per share is equal to expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value per share. Expected rate of return 34.375, normal rate of return 18% given in the last line of the problem, and paid up value per share. एक शेयर के ऊपर 8 रुपये पेड है, 10 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी कॉल करी ओनली 8. तो yield basis 15.38, 15 rupees 28 paisa is the
yield value of the share. Next problem. Problem number 5. See the problem number 5. From the following particulars, calculate the value of an equity share. 10,000 equity share of 10 each, 1 lakh. Profit for the last 3 years. 3 साल का profit दे दिया. 70,000, 60,000, 80,000. It is the practice of the company to transfer 20% of profit to reserve. जो भी average, अगर एक ही साल का प्रॉफिट रहता तो हम 1 साल का प्रॉफिट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट दिया, इसलिए एवरेज निकालेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट में से 20% विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व. अब बचा हुआ जो प्रॉफिट रहेगा, दैट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स. तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे अगर रहा तो, बट इन आवर प्रॉब्लम वी डोंट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. तो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट किसको जाएगा? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स. देन shares of similar companies quoted in the stock exchange yield 15% on their market value. यानी अदर कंपनीज का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है. तो NRR 15% is the normal rate of return. Again we have to find out the yield. देखिए average profit 70,000, 60,000, 80,000 divided by 3 you will get 70,000. 70,000 average profit. Average profit 70,000 less transfer to reserve 20% of 70,000 14,000. तो निकाल दो 56,000 बचे. दिस इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहता तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, लेकिन नहीं है, छोड़ दी. तो 56,000 इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर. नाउ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ERR, प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. प्रॉफिट अवेलेबल 56,000. इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉब्लम में देख सकते हैं आप, यू कैन, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम 1 लाख रुपीस इज द इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. 56% we got ERR. Now yield value is equal to expected rate of return by NRR into paid up value per share. Expected rate of return 56% और NRR प्रॉब्लम में दे दिया, similar companies are giving the return of 15% और paid up value per share 10 rupees. तो yield value of the share is 37.33 rupees. That's it. So this is problem number 5th. Now 6th problem you can see. Ascertain the yield value of the share of Sudesh Limited. Average rate of dividend declared by Sudesh Limited. यानी हम जो शेयर का वैल्यू मालूम करें वो सुदेश लिमिटेड कंपनी का है. तो सुदेश लिमिटेड कंपनी का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 20% और ए नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस. ये सुदेश लिमिटेड जैसी है वैसे ही दूसरे कंपनीज जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 15%. ये NRR है. NRR 15% है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सुदेश लिमिटेड इज 20%. ये ERR है. तो ERR 20%, NRR 15% and paid up value of the share is ₹10. Directly everything is given in the problem. Simply you have to substitute in the formula. Yield value per share is equal to expected rate of return divided by NRR into paid up value. So 20 divided by 15 into 10, 13.33 is the yield value of the share. Next, 7th problem. Ascertain the fair value of the share. Fair value is simply the average, simple average of intrinsic value and the yield value. तो value on the basis of net assets. Net assets basis के ऊपर जो value आता है उसको intrinsic value कहते हैं. तो intrinsic value दे दिया 125. Value on the basis of yield, ये yield value. तो problem में intrinsic value भी दे दिया, yield value भी दे दिया, and paid up value per share we don't require it. Fair value मालूम करने के लिए paid up value की जरूरत नहीं है, ignore. तो सिंपली फेयर वैल्यू का फॉर्मूला, फेयर वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2, 125 प्लस 140 डिवाइड बाय 2, 132.5. दैट्स इट. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नाउ वी आर कमिंग टू द मेन प्रॉब्लम. अब मेन प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट मेन प्रॉब्लम. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राजू कंपनी लिमिटेड एज एट 31st December 2004. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 6 lakh. Reserves and surplus 60,000. Non-current borrowings, bank loan, ये outside liability. Outside liability है 40,000. Trade payable, ये भी outside liability है 20,000. तो दो outside liability होगी, bank loan और trade payable. Non-current assets में fixed assets, tangible 3,80,000. Intangible, goodwill 60,000. Non-current assets, other non-current assets, preliminary expenses, ignore. Current assets, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. नोट्स दे दिया. नोट्स में देखिए शेयर कैपिटल में दोनों टाइप के शेयर्स हैं. 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each 5 lakh, 1,008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each 1 lakh.
So we have both the classes of shares, equity and preference. Reserves and surplus, general reserve, P&L account, we don't require it. Tangible assets, land and building, plant and machinery, furniture, 3,80,000. The value of the assets is assessed as follows. अभी तो हम बैलेंस शीट देखे, लेकिन एडजस्टमेंट में प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू देता है, तो ये वैल्यूज लेना. Goodwill 70,000. We should not take the balance sheet value of goodwill, we should take 70,000. Machinery 1,76,000, this value will take. Land and building 2,25,000, this value will take. Stock in trade 1,30,000. Furniture to be depreciated at 10%. Furniture का value balance sheet में 30,000 है. 30,000 में से 10% माइनस कर देंगे, 3,000 माइनस कर देंगे, 27,000 लेंगे. Then debtors are expected to realize 80% of book value. Debtors, तो बैलेंस शीट में debtors 90,000 दिया, लेकिन उसका realizable value 80% है. तो 90,000 का 80%, 72,000 you will get. Find out the value of the equity share. That's it. You can see it. Calculation of intrinsic value per share. Goodwill. Goodwill 70,000. Machinery 1,76,000. Land and building 2,25,000. Furniture 30,000 में से 10% निकाल देंगे, 27,000. Stock as it is. Debtors 80% of 90,000, 72,000. Bank balance 60,000. Don't forget to take the bank balance. Bank balance is also one of the asset. So totally 7,60,000. Now outside liabilities are bank loan creditors 40,000, 20,000 निकाल दो, 60,000 को 7 लाख रुपीस shareholders fund. पूरे shareholders का fund 7 लाख रुपीस है. अब उसमें से preference share capital को निकाल देंगे 1 लाख. Preference share capital 1 लाख निकाल दिए. तो 6 lakh rupees is the fund available for equity shareholders or net assets available for equity shareholders. 6 lakh. So intrinsic value is equal to 6 lakh divided by 5,000 equity shares. 120 rupees is the intrinsic value of share. That's it. So first main problem we have completed.